Hi guys, this is Rivita here and you are listening to the Brown Girl Rants. अच्छा, सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है, सबसे सब कुछ बोलने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि the voice quality in this episode might not be up to par, but it still might be listenable, hearable. Um, it still might be good enough to listen, लेकिन it might not be that good और शायद बीच में थोड़ी खड़ की आवाज़ आए. लेकिन the thing is that कि I am recording in my room और क्योंकि I could not record in the store, I have been recording in the store ever since I started the podcast. लेकिन अब सीन ये है कि मुझसे नहीं गर्मी में स्टोर में बैठ के हो रहा था. इवन तो स्टोर में बहुत अच्छी आवाज़ आती है, इतनी अच्छी आवाज़. आई यूज़ एन ईयरफोन माइक और मैं हमेशा से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ नया माइक लेने के लिए. मुझे लेना है लेकिन मुझे समझ नहीं आती मुझे कौन सा लेना चाहिए. अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और आप मुझे कोई माइक रिकमेंड कर सकते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो. जो बहुत अच्छे माइक हैं वो हैं 70,000 के, 70,000 के. मैं आई एम विलिंग टू बाई समथिंग अंडर 10,000, ठीक है, या फिर 10,000, क्योंकि मुझे लगता है कि आई लव, इवन दो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस शो monetary wise, लेकिन still I think I love it enough to invest a few in it क्योंकि it is my hobby. तो इस वजह से, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा. आई थिंक कि अगर वो होता तो शायद मेरी सिचुएशन इस वक्त बेहतर होती. लेकिन बात ये थी कि पिछली 2 एपिसोड से बहुत गर्मी थी और मैं गर्मी में बैठ के स्टोर में रिकॉर्ड कर तो रही थी, लेकिन वो दोनों एपिसोड्स जो थी वो अंडर 1 आवर थी और उन दोनों को रिकॉर्ड करके सुनने का मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंजॉय नहीं कर पा रही और गर्मी में बैठी हुई हूँ तो फ़ायदा नहीं है ऐसी एपिसोड रिकॉर्ड करने का, बेशक उसकी साउंड क्वालिटी जितनी भी अच्छी हो. इससे बेहतर है कि मैं अपने रूम में बैठ के रिकॉर्ड कर लूँ तो मे बी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन स्टिल एटलीस्ट आई कैन इन्जॉय इट. और अगर मैं इंजॉय करूँगी तो ही सुनने में भी मज़ा आएगा. ओके, गुड, फाइन. नेक्स्ट इज दैट के हाउ डिड ईद वेंट फॉर यू ऑल. इज दैट इवन अ सेंटेंस? ईद कैसी रही? हाउ डिड ईद वेंट फॉर. अच्छा, मेरी ईद जो थी वो, आई एम आस्किंग, आई डोंट नो, यू गाइस कैन रिप्लाई मी ऑन माई इंस्टाग्राम डीएम के कैसी ईद रही. लेकिन मेरी ईद जो थी इट वॉज फाइन, इट वॉजंट गुड, इट वॉजंट बैड. तीनों दिन मेहमान आए थे और तीनों दिन मेहमान आए थे तो तीनों दिन वी हैव टू वर्क. लेकिन इट वाज क्विक मेहमान. पहले 2 दिन वाले मेहमान बड़े मतलब के क्विक मेहमान थे. जो तीसरे दिन वाले थे दे वर वेरी क्लोज मेहमान, मतलब फर्स्ट रिलेशन वाले मेहमान. तो विद देम आई हैड सो मच फन. जो पहले 2 दिन वाले मेहमान थे वो ज़रा फॉर्मल थे और जो थर्ड डे वाले थे वो फन वाले थे. तो आई डिड हैव फन, लेकिन गर्मी बहुत थी तो इट वाजंट द मोस्ट मेमोरेबल ईद. लेकिन वो स्टिल फन. आई ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. मेरे लिए ईद का बेसिकली यही होता है कि मैं ईद की नमाज पढ़ लूँ, एंड आई डिड दैट इस साल की दोनों ईद में. तो मैं वो हो जाए तो मुझे लगता है कि हाँ ईद हो गई, मतलब जो मुझे ईद पे करना था वो मैंने कर लिया. क्योंकि फॉर मी दैट्स द मोस्ट इंजॉयबल थिंग पूरी ईद पे. और मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तो ही मुझे लगता है कि ईद है. क्योंकि मतलब आई रियली लव गोइंग फॉर ईद नमाज. आप जाते हो और आप सब में बैठते हो. इवन दो मैं लड़कियों में मेरे घर से कोई नहीं और जाता, और लेकिन मैं जाती हूँ हमेशा और मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पे बैठने का. और फिर मेरे आसपास कोई और बैठी होती है तो उनको फिर उनसे ईद मिलने का बहुत मज़ा आता है. और फिर फिर मैं जाती हूँ तो क्योंकि ऑब्वियसली माय डैड एंड माय ब्रदर आर देयर तो उनसे मिलती हूँ, फिर हम घर जाते हैं. तो मतलब मेरे लिए वही है बस. तो इस वजह से ई वॉज प्रिटी नाइस. इट वॉजेंट इट वॉजेंट द मोस्ट मेमोरेबल, लेकिन इट वॉज नाइस. आई डिड, मतलब कि आई डिड मिस के, आई विश आई हैड, आई लव हैविंग people come over to my home. I love having people come over to my home. और मुझे लगता है कि बचपन से ये है कि आवर हाउस इज सॉर्ट ऑफ द मेन हाउस और इस वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ गेस्ट कम ओवर. लेकिन इस वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ ना, और आई हैव ऑलवेज बिन अ होस्ट, मतलब ये वाला होस्ट नहीं, लेकिन मतलब हाउस होस्ट, ठीक है ना. आई हैव ऑलवेज बिन दैट. तो और मुझे लगता है कि वो चीज़ जो मेरे पेरेंट्स में थी वो मुझ में भी ट्रांसफ़र हो गई है. क्योंकि आई डू टेंड टू इनवाइट पीपल एट होम. और मैं मुझे मतलब कि इवन इन माय फ्रेंड सर्कल इतना, मैं मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ज़्यादा मेरे घर आए हुए हैं और मैं कम उन लोगों के घर गई हूँ. क्योंकि आई एम ऑलवेज लाइक कम ओवर कम ओवर कम ओवर. तो आई ऑलवेज, मतलब कि आई लव हैविंग फ्रेंड कम ओवर, लेकिन आई डू enjoy more chill come over.
कि आई एम कमिंग ओवर एंड लेट्स ऑर्डर पिज्ज़ा एंड वॉच समथिंग, मुझे वो ज़्यादा पसंद है कि लेट्स जस्ट चिल, बजाय इसके कि मैं पूरी टेबल डिशेस की भर के रख दूँ। मतलब कि ऑब्वियसली वंस इन अ वाइल, साल में एक बार बहुत अच्छा है, बहुत करने में मज़ा आता है, लेकिन आई कैन नॉट डू दिस एवरी मंथ और इवन एवरी क्वार्टर। वो बस साल में एक बार ही चीज़ अच्छी लगती है। आई एम मोर लाइक के ओ लेट्स डू वन डिश और लेट्स जस्ट कम ओवर एंड ऑर्डर पिज्ज़ा, और हम या फिर कुछ हम कैजुअल सा खा लें, बाहर जाके खा लें, कुछ कर लें। मुझे वो वाले मेहमान ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से आई डू लव हैविंग पीपल, लेकिन अगर कोई आई डू लव हैविंग पीपल हु आई रियली लव, जो कि मेरे फर्स्ट कजन्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, और या फिर जो जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ। लेकिन और कुछ फॉर्मल गेस्ट होते हैं जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता मेरे माँ बाप को, तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड फॉर देम, आई विल हेल्प देम। लेकिन आई जस्ट डू नॉट लाइक द फैक्ट कि मुझे खाना, मतलब कि हर साल हर महीने, मतलब कि साल में एक बार खाना सही है, लेकिन आई डू नॉट लाइक कि बस उसी में लगे रहो। आई डोंट थिंक दैट यू एंजॉय दैट गेस्ट कम ओवर, जब आपको पूरी दावत अरेंज करनी हो और फिर जो है आपको फिर बर्तन धोने हो और फिर आपको उसकी भी टेंशन हो, एंड वी डोंट हैव अ मेड जो कि ऐसे कोई काम करती हो, तो इट्स मी, माय मॉम एंड माय सिस्टर। तो इट्स वेरी टायरिंग। तो और आई डू एंजॉय इट, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स नॉट लाइक आई डोंट एंजॉय इट, आई लव हैविंग पीपल कम ओवर एंड आई लव मेकिंग थिंग्स फॉर पीपल। लेकिन आई, मुझे लगता है कि वन डिश इज अ वेरी कूल थिंग। आई थिंक के साल में एक बार ऐसी चीज हो तो सही है। आई डू नॉट लाइक having this every single month or even quarter a year, even 3 times a month, बस साल में एक बार सही है। और आई enjoy chill guests more। और मेरे जितने भी इस वजह से जो दोस्त हैं उनको, मतलब कि वो इतना मेरे घर आ चुके हैं कि अब उनसे बड़ा चिल सीन हो गया हुआ है। आई नेवर केयर कि ओ वो आ रहे हैं, मैं ये बना के रखूँ, वो बना के रखूँ, या मैं मम्मा को कहूँ ये बना के रखे, वो बना के रखे। मैं कहती चिल सीन है, घर में कुछ बना हुआ है खा लेंगे, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तो आई लाइक हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग। और मैं एक्चुअली कुछ महीना पहले अपनी फ्रेंड के घर गई थी, इट वाज, मतलब इट वाज काइंड लाइक अ गैलेंटाइंस पार्टी, और उसमें वी मेड पिज्जा, इवन दो ज़्यादा काम होस्ट नहीं किया था। और लेकिन इट वाज स्टिल फन कि इट्स नॉट लाइक कि शी हैव टू प्रिपेयर इट और फिर हम, मतलब कि वी वर इन द किचन विद हर। और तो ऐसे, मतलब कि इवन दो शी वाज डूइंग द मोस्ट ऑफ द वर्क, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि ओ काम थोड़ा सा डिवाइडेड है, या थोड़ी सी सुकून है। तो आई लाइक दैट, ठीक है। तो जो भी करो मिलके करो। और आई डू नॉट नो, मेरी एपिसोड इस चीज़ के बारे में है भी नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत बड़ा रैंट कर दिया, लेकिन दिस इज व्हाट दिस पॉडकास्ट इज फॉर। Anyways, today podcast is about aging, the fear of aging, or या प्रीटी मच इट्स अबाउट दैट। और मुझे ना, मैं बड़ा सोच रही थी कि यार मैं इस एपिसोड का क्या टाइटल रखूँ, क्या टाइटल रखूँ। मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है ना वो टाइटल रखने पे करती हूँ, और फिर मुझे ये मिल गया टाइटल, तो मैंने कहा कि ओ वील गो विद दैट। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने एक्चुअली 2 एपिसोड पहले इस चीज़ के बारे में पॉडकास्ट बनाई थी, लेकिन एज आई सेड कि इतनी गर्मी थी एंड आई वॉज नॉट फीलिंग इट, और क्योंकि मुझे वॉइस क्वालिटी अच्छी चाहिए थी, इसकी वजह से मैं अपनी कंटेंट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, ठीक है। तो ये आज नहीं होगा, तो वील मेक अ फन एपिसोड। आई एम ट्राइंग, आई वांट टू मेक एन एपिसोड लॉन्गर देन 1.5 आवर, तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड। और असल में बात ये है कि आई डू मेक एपिसोड्स ऑन डिफरेंट टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेन जो जॉनरा है पॉडकास्ट का, हालांकि मैंने ये पहले सोची नहीं थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, और मतलब कि इट्स मोर अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन वर्क ऑन about yourself, be it physical or be it internal, ठीक है। तो it's more about the person, मतलब कि even this topic is about the things that you can change within yourself, और मतलब कि तो I'll call it personal grooming, I don't know क्या है, and even though I have no experience with psychology or whatsoever, लेकिन I tend to be a happy go lucky person, and somehow जो मैं कहती हूँ वो कुछ लोगों को पसंद भी आता है, ठीक है। और a very very good friend of mine I met online, और वो हमेशा ट्वीट करती रहती है, शाउट आउट तो नहीं थी, she always tweets कि I am listening to Ravi's podcast while I am cycling or while I'm on my walk। तो I really love that she does that, ठीक है। और वो मुझे, और she मतलब कि always tells कि how मेरी podcast सुन के she gets motivation to try new stuff,
तो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी. आई विश आई कुड बी साइकिलिंग टू. मेरे पास साइकिल है नहीं, लेकिन दैट साउंड्स सो कूल. एंड बाय द वे, आर यू गाइज गोइंग फॉर अ वॉक? क्योंकि आई होप के यू ऑल हैव अ वेकेशन और समथिंग. लेकिन आई डू एंजॉय वॉक इन समर अलॉट. ऑब्वियसली वॉक इन फॉल और विंटर में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में इतनी जो है वो सर्दी नहीं पड़ती. लेकिन आई थिंक दैट वॉक इन समर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब एंड इट्स वेरी फन एक्चुअली. और मैं आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर इट जब भी लाइट जाती है, स्पेशली उस घंटे के अराउंड, क्योंकि वो सबसे कन्वीनियंट टाइम होता है मेरे लिए रात के टाइम, क्योंकि सब कुछ बंद होता है, कुछ भी नहीं चल रहा होता, काम भी नहीं कर सकते. तो वो टाइम होता है जिसपे आई लव गोइंग फॉर अ वॉक. तो इस वजह से मतलब क्या, आई वुड रियली लव यू ऑल टू गो फॉर अ वॉक टू. मतलब if you are not going for a walk, so you should try it. I hope you enjoy. Or you can listen to my podcast or any other podcast while going for a walk. If you do not have company, so you will enjoy it more. मैं तो वैसे ही चाहती हूँ कि मेरी podcast जब कोई सुन रहा हो तो they should be doing some other physical thing, be it arranging their wardrobe or making their breakfast or dinner or lunch or um, doing dishes or doing laundry, or मतलब कि ऐसा कोई काम करते हुए you should be listening to my podcast so that it's a productive thing. ठीक है. लेकिन अच्छा, also आई वॉज डिबेटिंग, मैं ना डिबेट कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मुझे लग रहा था ओ मैं इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही. तो मैंने सोचा कि ओ आई डू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द पॉडकास्ट एट सम पॉइंट. मतलब क्योंकि और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस सीजन 1 सीजन 2 थिंग. तो आई थिंक आई वुड वांट टू डू अ सीजन 2. लेकिन आई और मैं अपना पूरा मतलब कि रिन्यू करूंगी. आई हैव अ न्यू पोस्टर. आई सी कि अगर मुझे अपना टाइटल चेंज करना है या जो भी करना है, मतलब कि आई वुड वांट टू रीब्रांड माय पॉडकास्ट और एक और नया सीजन स्टार्ट करूँ थोड़े से ब्रेक के बाद. और मैं वो सोच रही थी कि अभी मैं ले लेती हूँ और उसके बाद जब फॉल स्टार्ट होगा सितंबर या मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो मैं फिर आती हूँ. लेकिन फिर मैंने कहा कि दिस इज द टाइम आई शुड बी मेकिंग पॉडकास्ट, क्योंकि एवरीवन इज फ्री राइट नाउ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्री राइट नाउ. तो मुझे नहीं रुकना चाहिए. I do want to take a break. I am not sure what time should I take a break. सर्दियों में मुझे लगता है it would be very convenient for me पॉडकास्ट बनाने में. तो सर्दियों में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए. तो मे बी रमज़ान जो नेक्स्ट आएगा उसमें I'll take a break. और उसके बाद जो है मैं फिर रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो पूरा सीजन 2 स्टार्ट करूंगी और फिर वो सब कुछ रीब्रांड करूंगी. और अभी उसमें बहुत टाइम है, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. दूसरा मैंने ये सोचा था कि ना अब मेरे ना जहन में ऑब्वियसली मुझे लगता है कि देयर सो मेनी टॉपिक्स आई कैन टॉक अबाउट. आई कैन इवन अगले साल बेसिकली मैं पुराने टॉपिक्स भी कवर कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम इवॉल्विंग एंड चेंजिंग एज अ पर्सन. तो शायद मेरा उस चीज़ के बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो. लेकिन मैं फिर एक टाइम था कि मुझे बिल्कुल कोई आइडियाज नहीं आ रहे थे. तो मैंने सोचा और मैंने कहा कि यार मे बी आई शुड मतलब कि डू इट वन एपिसोड इन 2 वीक्स. मतलब एक एपिसोड 2 हफ्ते में आए. लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, जैसे जा रहे हैं वैसे जाने दो और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो बेसिकली और मतलब कि आई एक्चुअली हैव प्लेंटी ऑफ आइडियाज जो कि मुझे मेरे फॉलोअर्स ने इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट किए हुए हैं. और अब ये लास्ट मतलब कि दिस एंड देयर इज देन अदर टॉपिक, देन देयर इज अनदर टॉपिक, उसके बाद आई ऑफिशियली रन आउट ऑफ टॉपिक. तो उसके बाद मैं लोगों की रिक्वेस्ट भी देखूंगी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव गेस्ट, और आई थिंक दैट हैविंग गेस्ट वुड बी सो इंटरेस्टिंग. और इट वुड बी अ चेंज फॉर द लिसनर्स टू. लेकिन आई एम जस्ट टेस्टिंग कि मुझे करना कैसे है, क्योंकि ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव अ स्टूडियो एंड अ प्रोडक्शन पूरा जिसमें मैं बुलाऊं और वी कैन हैव अ चिट चैट. और हम फिजिकली नहीं मिल सकते, तो आई हैव टू कंडक्ट इट ऑनलाइन. तो आई एम सीइंग कि मैं देख रही हूँ कि मैं ऑनलाइन किस तरह एफिशिएंटली कर सकूँ. तो ये दैट्स द प्लान विद द पॉडकास्ट. आई वाज मतलब कि मैं अपडेट कर रही हूँ कि मेरे ज़हन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. देयर इज़ अनदर वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ और वो पिछले 2 महीने से चल रही है, लेकिन आई थिंक इट वुड बी कमिंग आउट वेरी सून. तो एटलीस्ट आई शुड प्रिपेयर यू ऑल फॉर इट. आई माइट बी नहीं, आई वुड फॉर श्योर वुड बी को होस्टिंग अनदर पॉडकास्ट. This might not be that exciting for you guys क्योंकि you guys already listen to me, लेकिन that episode का format पूरा different है. I am doing it with my best friend, childhood best friend. तो we are so excited about it. और उसका genre में उस podcast का format और genre इस podcast से बिल्कुल different है. मैंने इस पॉडकास्ट में वो टच करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मैं अपना पूरा वो बिल्डअप कर चुकी थी पर्सनालिटी ग्रूमिंग वाला
पूरा तो मुझे लगता है कि वो इतना चला नहीं, लेकिन आई स्टिल वांटेड टू डू इट, और माय फ्रेंड वांटेड टू डू इट, तो शी सेड कि लेट्स मेक इट हैपन, और मैंने कहा ओके, आई वुड नॉट माइंड हैविंग एन अनदर पॉडकास्ट. तो आई माइट बी नहीं, आई एम को होस्टिंग अनदर पॉडकास्ट. आई एम नॉट श्योर कि वो आएगी कब, मे बी इस महीने आ जाए, मे बी अगले महीने आ जाए, बट इट्स कमिंग एंड इट वुड बी फन. और उसका जॉनरा, मे बी आई शुड रिवील इट, वी वुड बी रिव्यूइंग fiction. तो any kind of movie, any kind of book, any kind of literature piece, any kind of, नहीं literature piece में वैसे और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ fiction नहीं आता. I मतलब कि I don't know कि fiction के अलावा भी हम non fiction भी कुछ, I think we would be, मतलब कि we would not, मतलब कि हम हम नॉन फिक्शन डिस्कस करेंगे जो फिक्शन से क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है ना. और मतलब कि बेसिकली वो, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सीरीज, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट, आई ऑलवेज वांटेड दैट, और आई विश मेरे पास इतने पैसे होते कि आई वुड हैव इन्वेस्टेड अ होल प्रोडक्शन और कैमरा, और जैसे वो हम देखते नहीं है इंस्टाग्राम पे वीडियोस, या फिर जो भी आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखते हैं जिसमें होस्ट बैठे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर, मतलब और बातें कर रहे होते हैं. आई विश आई वुड हैव इन्वेस्टेड, आई वुड हैव हैड दैट मनी टू इन्वेस्ट दैट इन. लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज. इस पॉडकास्ट पे मेरा इतना कोई प्लान नहीं है कि मैं इसको यूट्यूब पे डालूँ या वो करूँ, लेकिन उस पॉडकास्ट में है, क्योंकि ये पॉडकास्ट आई लाइक इट बीइंग एट द कंफर्ट ऑफ माय होम, और आई लाइक इट बीइंग द पॉडकास्ट के जो, आई डोंट वांट यू टू सी मी विजुअली व्हाइल मेकिंग दिस पॉडकास्ट, लेकिन उस पॉडकास्ट पे आई थिंक इट वुड बी सो मच फन, ठीक है. और इस पॉड मुझे लगता है विद गेस्ट या दो पीपल हो तो यू माइट वांट टू सी इट विजुअली टू. लेकिन लेट्स सी, अभी आई एम इन टॉक्स विद माय फ्रेंड, तो आई डो नॉट नो व्हेन इट्स कमिंग और क्या हो रहा है. और उसी के साथ, क्योंकि सिंस उससे भी मैं हर हफ्ते मिल नहीं सकती और हम हर एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे होंगे. तो जैसे ही मुझे उसके साथ पता लगेगा कि हाउ वील एबल टू रिकॉर्ड इट ऑनलाइन, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं अपनी पॉडकास्ट में गेस्ट कैसे लाऊंगी. और डोंट वरी, आई वॉन्ट बी निगलेक्टिंग दिस पॉडकास्ट, लेकिन आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू लिसन टू दैट पॉडकास्ट टू, एंड यू ऑल शुड बी, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन होते हैं तो 2 पॉडकास्ट होंगे. वो वाज सो मच फन. लेकिन दिस इज, मतलब मैंने 17 मिनट्स, आई एम हियर टुडे फॉर अ लॉन्ग एपिसोड. तो आई होप यू डोंट माइंड मी speaking this much of things that are not related to my topic. लेकिन I have to give you guys a life update. ये है, we'll take a short break and come back, and then we will talk about our topic, which is about the fear of aging. So हाँ, stay tuned. Okay, so I have to tone down my volume, क्योंकि मैंने पिछली अभी पूरी क्लिप सुनी है. आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अभी आई एम इन द मिडल ऑफ रिकॉर्डिंग और मैंने अपनी पिछली क्लिप सुनी है, मेनली बिकॉज आई वॉज इनसिक्योर के कैसी आवाज़ आ रही है ये वो, और इसमें ऐसा बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आई एम स्क्रीमिंग, लेकिन आई एम नॉट स्क्रीमिंग गाइज. और अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो आपको ऐसा फील ना, आई एम जस्ट एक्साइटेड, आई एम टॉकिंग इन एक्साइटमेंट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आई एम स्क्रीमिंग. तो आई हैव टू टोन डाउन माई वॉल्यूम, क्योंकि दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एपिसोड, तो आई डू नॉट वॉन्ट इट टू ruin it for you all. Okay, got it? Acha, let's start. Now, my birthday passed a week, no, a week or two, no, 2 or 3 weeks back. My birthday passed. It was on 16th June, or it was one of the best birthday I ever had. अब बेसिकली सीन ये है कि आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि we do get depressed on our birthdays. I have heard a lot of people saying that they get depressed on our birthday. Especially for me, my 20th birthday was really difficult for me. एक तो turning 20 is a big deal, और you are मतलब कि even though nothing changes, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि oh, I am not a teenager anymore, और now I am an adult, या फिर मैं अपनी early 20s में हूँ, मैं अपनी 20s में चली गई, and you want, और जब आप 20, अब जब आप कन्वर्ट हो रहे होते हैं 19 से 20, तो आपको होता है कि ओ आई विश आई कुड बी अ टीनेज फॉर अ लिटिल लॉन्गर, मतलब कि लीविंग टीनेज इज़ अ बिग डील. और आई थिंक इट्स द सेम व्हेन यू आर गोइंग इन योर 30s, ठीक है. और मुझे लगता है कि आई डोंट नो उसके बाद क्या सीन होता है, लेकिन आई थिंक उसके बाद इट्स फाइन. आई डोंट नो, आई डू नॉट नो एनीथिंग, लेकिन आई थिंक इट्स फाइन आफ्टर वर्ड्स यू टर्न 20. उसके बाद 40-50 आई थिंक आर नॉट दैट स्केरी, क्योंकि यू आर यूज टू इट. लेकिन आई डू नॉट नो फॉर माई मॉम, आई
I asked her कि how it was for her turning 30 क्योंकि a lot of people fear turning 30 and I understand it very well. लेकिन for her she said कि I did not fear turning 30 but I feared turning 40 क्योंकि when I was turning 40 तो मुझे लगा oh I am at that age. लेकिन I think it might be because of the people I watch or because of the influencer I watch कि मुझे लग रहा है कि oh 30 is that age when I will start feeling older. ठीक है, and I don't want that for myself, right? तो इस वजह से I constantly tell myself and prepare myself for the things that I'm about to say in the next couple of minutes कि how you can get over it. लेकिन I just want to first acknowledge the fact कि it's very real. It's not something you should be ashamed about. It's not something that you should मतलब कि किसी को मजाक उड़ाना चाहिए किसी चीज़ पे कि ओ शी इज़ मतलब कि इसको ये शी इज़ डिप्रेस्ड ऑन हर बर्थडे बिकॉज शी इज़ गेटिंग ओल्डर आई थिंक इट्स अ वेरी रियल थिंग एंड आई एक्नॉलेज इट आई पर्सनली माई सेल्फ वेंट थ्रू इट और मैं पिछले साल तक आई थिंक आई लो की स्ट्रगल्ड विद इट लेकिन इस साल फाइनली आई डू नॉट इवन दो मैं एक साल पे मतलब कि आई डिड नॉट गेट 1 year younger. I still got 1 year older, but still, is bar I am embracing it very well as compared to the past 4 years. जब से I think I turned 18, I was dying to turn 18. By the way, I just wanted my identity card और मुझे लग रहा था कि बस दुनिया खुल जाएगी मेरे सामने और basically you are not a minor anymore when you turn 18 और मुझे बस था कि मैं जल्दी से 18 साल की हो जाऊँ लेकिन once I turned 18 I realized कि it's not that fun, it's not that funny और 18 से लेकर 22 तक basically मेरे यूनिवर्सिटी के 4 साल I have lived in this मतलब कि fear of aging और मुझे हर साल धचका लगता था कि oh I'm turning 22 and I'm not doing anything क्योंकि I think कि university is difficult time क्योंकि you are seeing people who are as मतलब कि you are who are same age as you earning and making mark and then you see yourself still dependent on your parents and going to university and मतलब कि pursuing a degree लेकिन some of her friends are not pursuing a degree and they're earning or they are pursuing a degree and earning but like you just want to get independent you're like that's it मुझे ये करना है लेकिन you still you also don't want to get old or मतलब कि you just think that you are not achieving as much as the people of your age are and you get anxious. The other thing is that when you are dying your whole life your whole childhood to become an adult but when you're actually at that point when you're actually touching adulthood तब आपको होता है कि oh I want to be a child again क्योंकि it's not that fun as it seemed like when you were a child और आपको लगता है कि being an adult mean I have to give up so many things I find joy in और मुझे mature हरकतें करनी पड़ेंगी मुझे mature act करना पड़ेगा I have to give up this and that और I shared that in the वो post graduation blues वाली episode 2 कि you just don't want to get into the adult life क्योंकि आपको लगता है कि it's serious, it's boring और you have to give up a lot of things that makes you happy and मतलब कि इस वजह से भी आप जो है आप एज करने से घबराते हो क्योंकि you just want to be young forever or obviously you do not want to get old and this is very real मैं बचपन में सोचती थी मतलब कि a lot of people obviously I've seen a lot of people that lie about their age और हर कोई उनका मजाक उड़ाता है ये करता है वो करता है और मैं बचपन में मतलब कि पूछती थी मैंने अपनी कज़न से एक बार पूछा कि why people lie about their age कि मैं तो कभी अपनी उम्र ना किसी को गलत बताऊं तो शी सेड कि यू विल अंडरस्टैंड इट व्हेन यू विल टर्न ओल्डर and I understand it so much now. I understand why people lie about their age and I understand why they want to feel younger. And और मैं पहले सोचती थी कि oh why do not people embrace their age और ये नहीं करते वो नहीं करते. I understand now. लेकिन I am here to tell you guys how you can embrace your age क्योंकि I think it's not healthy कि आप जो है वो मुझे लगता है it's okay to be that age and you have to accept it gracefully and embrace it and live it to the fullest until you can
वरना you can be miserable when you are 17, you can be miserable when you are 27 or 37. If you are not changing the way you live right now, if you are not changing the way you think, the way you feel about yourself right now, तो फिर most probably आप 5 साल बाद जाओगे और आप फिर अब 5 साल पहले वाली अपनी एज याद करोगे कि आई विश आई वुड हैव लिव्ड माई फुलफिल आई वुड हैव लिव्ड फुलफिल आई वुड हैव लिव्ड I would have fulfilled. I don't know. I wish I would have lived to the fullest. ये मुझे कहना था. I wish I have lived to the fullest in that age. और फिर आप उस एज में ये सोच रहे हो तो आप उस एज में भी नहीं वो कर रहे. मतलब कि you can be miserable at any age, and it does not depend on the fact that I am older now, or and I wish I was younger enough. Obviously, if I had the option, if you had the option, if anyone in this world had the option to stay younger, then we would have. Obviously, no one wants to get older, lekin we think of getting older a very miserable thing, a very sad thing, lekin you can make it better for yourself if you want to. Life is not gonna stay the same for you, you gonna change, ठीक है. जब with graduation, I think I have learned a lot how to accept change and how to find excitement in new things and how to accept life as it is. और मैं जब ग्रेजुएट हो रही थी तो मुझे लगता था कि बस आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं पड़ा. Marriage did not excited would excite me, having kids would not excite me, having a husband would not excite me. It still doesn't. लेकिन I मतलब कि पहले जो है मैं सोचती थी कि no, this is not the life I want to live. लेकिन I know I want that to happen for myself, maybe not right now, लेकिन now I want that, and now I can see myself enjoying that phase of my life too. पहले मैं सोचती थी no, मतलब मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं रहेगी, my priorities would be different, I would be doing this and that. लेकिन that's the beauty of life के you have different phases, and there's constantly people coming in and leaving and coming in and leaving, and you have to accept life the way it is, and you have to find joy in every single phase of your life. So your life is not gonna stay the same. With age, things gonna change for you, and you cannot sit here and regret your past decisions and accept कि मैंने अपना आई डिडंट लिव माई पास्ट टू द फुलेस्ट, और आप एक्सेप्ट और फिर आप अपना प्रेजेंट भी नहीं उस तरह एंजॉय करें. अगर आप बैठ के अपने पास्ट पे रिग्रेट कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप अपना प्रेजेंट भी इंजॉय नहीं कर रहे हो, और आप आगे जाके फ्यूचर में जो आपका प्रेजेंट है उसके बारे में सोच के फिर रिग्रेट करोगे. तो यू नीड टू स्टॉप दैट सर्कल. यू नीड टू एक्सेप्ट where you are right now. You need to accept your age. You need to accept that oh, I was once 17 or I was once 15 and I did not did that. Like, and I'm 21 or 22 or 23, or I am 18, or whatever age you are, or I am 25 right now, and I still can live my life to the fullest. और सबसे पहली बात ये है कि accept where you are right now and be present in the moment. पास्ट की ना सोचो, फ्यूचर्स के बारे में अच्छी मैनिफेस्ट करो, लेकिन बी प्रेजेंट. दैट्स द थिंग. ठीक है, मैं इस वक्त सिर्फ सोच रही हूँ कि मेरा 2023 कैसा जाएगा, या मेरा 23 जो पूरा साल अभी मेरा स्टार्ट हुआ है फॉर माई 23rd ईयर विल गो. मैं नहीं सोच रही कि ओ हाउ it would be when I'll be 26, or how it would be when I'll be 29 turning 30. मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही. तो be present in the moment, or accept the way you are and accept where are you at the moment. क्योंकि I don't know if I shared it or not, लेकिन I always want to start a podcast or be a YouTuber or be मतलब कि a content creator, और मतलब कि ऐसी कोई चीज़, मतलब कि have do this, मतलब कि do that, इस तरह की कोई चीज़ since I was 15 years old. और मुझे हमेशा लगता था oh I'm delaying it, oh I'm delaying it, oh I'm delaying it. लेकिन I do it now, और I do not regret it not doing it at the age of 16 or 17, क्योंकि मुझे पता है कि उस वक्त मेरा टाइम नहीं था. I have a much more greater sense about so many things now. और उस वक्त अगर मैं पॉडकास्ट करती तो I would have not had anything to say. Now I think I have a little bit of wisdom, or I have a little bit of stories, and I have a little bit of
एडवाइसेस फॉर द पीपल हु आर यंगर फॉर मी, तो मुझे लगता है कि जब जो टाइम होता है यू कैन स्टिल अचीव व्हाट यू वांटेड टू डू। ऐसा नहीं है कि आप उस उम्र में हो तो ही वो चीज़ हो सकती है और उसके बाद नहीं हो सकती। तो डू नॉट लेट योर एज डिफाइन व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुडंट डू। ठीक है, दिस इज द थर्ड थिंग, डू नॉट लेट योर एज डिफाइन दैट। यू कैन स्टिल, मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि इफ आई वॉन्ट टू वॉच अ कार्टून आई वुड स्टिल कैन वॉच अ कार्टून। नो वन इज रिस्ट्रिक्टिंग मी के you are 23 years old, you cannot watch a cartoon. And I actually made a comeback in watching animated fiction, क्योंकि मैं पहले देखती नहीं थी और अब एकदम से मेरा फिर से इंटरेस्ट हो गया, तो now I'm watching it now, and now I'm watching animation of other languages. So it's so much fun. So I can still do whatever I wanted to do at the age of 15 with much more independence and with much more knowledge and wisdom and intelligence. So it's मुझे नहीं लगता, nothing have changed that much and nothing is restricting me to not do things that I dreamed of doing. तो मुझे नहीं लगता there's a certain age for something. Obviously you cannot go and play in kids play area, obviously for that thing you have to, लेकिन I think there is a lot of adult मतलब के gaming or indoor, I love going to indoor amusement park and I still मतलब के go, and I think there is a plenty of things you can have, so it's not like cannot enjoy. अब I think कि a lot of things मतलब कि a lot of people by age do not like doing things और मतलब कि they grow out of it. जैसे मेरा भाई है, he would love going to amusement park with me and हम दोनों जाते थे, हम बहुत enjoy करते थे. I still love going to amusement park. लाहौर में जॉयलैंड है बहुत famous, I love going there. My brother hates going there now. ठीक है, और मतलब कि we as kids would take every single ride in that park and enjoy and scream and have the best time ever. लेकिन now he does not enjoy it or he thinks it's useless to go over there, and that's him, that's okay. लेकिन I enjoy doing that, तो मतलब कि let yourself मतलब कि he is not deciding और मतलब कि he doesn't derive his fun from that whole amusement park thing. I do. So do what your heart says. Do not let your age or anyone else tell you कि what's appropriate and what's not. मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए तो मैं जा रही हूँ, उसको लगता है उसको नहीं जाना चाहिए, उसका नहीं दिल चाह रहा तो वो नहीं जा रहा है. So let your heart or your personality or your mind or whatever, let you decide what you want for yourself. And if you really want to do something, then you shouldn't think twice of not doing it. Ke, oh, it's not, especially if you're thinking ke, oh, it's not age appropriate for me. I hope that makes sense. Okay, now I should have added this point earlier, like a very important point is that कि stop lying about your age. Or I think this sounds harsh, or I understand. I still say कि I understand why people would lie about your age, लेकिन I want you to stop lying about your age. 1 साल का फर्क है, 2 साल का फर्क है, 4 साल का फर्क है. Do not lie, क्योंकि lying about your age means that you're insecure of your real age, or some people would have the knowledge that you're lying about your age and you will give them a मतलब कि your weakness कि you're insecure about your age. That's why you're telling yourself a year or 2 or 3 younger, क्योंकि you're insecure about their real face, and then they'll have this opportunity or they'll see it as a sign कि they can make fun of you behind your back and they can think मतलब कि या वो उस चीज़ को आपके खिलाफ किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, and you don't want to do that. You don't want to give your insecurity to other people. Even if you are मतलब के afraid of aging and you are not happy, or you think you're getting older, or you are not happy with your age, at least pretend in front of people कि you are, embrace your age, or tell people कि you're enjoying your age ताकि they would want to be like you at that age. ठीक है, बहुत I see a lot of people that are 50 years old and they're having मतलब कि they have the best persona, or I मतलब कि I want to be like them when I am 50 or 40. तो accept your age gracefully, embrace your age and stop lying to people about it, क्योंकि you do not, the last thing you want people to know is that कि you're insecure about your age.
even if you are, at least pretend that you are not, accept your age, do not lie about it. आई नो पाकिस्तान में आवर पेरेंट्स ऑब्सेशन विद हमारी एज पीछे लिखवाना, मेरी नहीं है, लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी एज 1 साल पीछे 2 साल पीछे लिखवाते हैं, और मतलब फिर वो कहते हैं कि ओ इसका फ़ायदा होगा आगे जाके। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि इसका क्या फ़ायदा है अगर किसी, क्योंकि मेरी एज एग्जैक्ट वही है, और मुझे नहीं पता कि मुझे इस चीज़ का क्या नुकसान हुआ है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आई डू नॉट थिंक कि कोई फ़ायदा कोई नुकसान होता है एज पीछे लिखवाने का। तो आई होप कि वी एज अ पेरेंट आवर जनरेशन वुड नॉट डू दैट विद टू आवर किड्स, क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एज अ चाइल्ड कि आप अपनी एज किसी को कुछ बता रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, आगे जाके आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको अपनी कौन सी एज किसको बतानी है, और इट्स कंफ्यूजिंग, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी एज, मुझे नहीं लगता इसका चीज़ का कोई फ़ायदा होता है और कोई कुछ भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से डू नॉट लाई अबाउट योर एज, और आगे जब टाइम आए तो डू नॉट राइट फेक एज ऑफ योर चिल्ड्रन, क्योंकि इसका बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। आपका पूरी ज़िंदगी बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सी एज बताऊं, और फिर अगर किसी को पता लग जाए, क्योंकि स्पेशली योर रिलेटिव्स नो द रियल एज, तो वो पूरी ज़िंदगी मतलब कि दे फाइंड दिस थिंग टू टीज यू कि ओ तुम्हारी क्या एज है, तुम्हारी क्या एज है, शनाख्ती कार्ड पे इतनी है, इस पे इतनी है। तो यू डोंट वांट टू गिव एनी वन दैट रीज़न टू टीज यू, ओके। टेल पीपल बोल्डली कि आई एम दिस एज, ताकि वो मतलब कि उनको मौका ही ना मिले इस चीज़ का, और अगर आप उस चीज़ को खुद फील नहीं करोगे ना, तो कोई और फील भी नहीं करेगा। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दैट आर 2 3 4 years, नॉट 4, मे बी 4, मतलब कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दैट आर मच मोर यंगर फ्रॉम मी, ठीक है, एंड दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, लेकिन आई नीड टू सिट इन देम एंड लाई अबाउट देयर माई एज सो दैट आई कुड फिट इन देम, ठीक है ना। आई डू नॉट नीड टू डू दैट, मैं वैसे ही मतलब कि आई थिंक कि यू कैन स्टिल एंजॉय। तो इसका मतलब ये, और मुझे लगता है कि वंस यू गेट ओल्डर यू विल रियलाइज के एज, फ्रेंडशिप डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू एज। यू कैन बी फ्रेंड्स विद समवन 20 years older than you and 20 or 20 years elder than you, or you can have fun with someone who is much more younger than you or much more older than you, ठीक है, you can have a good conversation with someone who is much more older than you or younger than you. So you do not lie, you should not, and you do not need to lie about your age just to fit in some people, ठीक है ना। मेरे मतलब कि आई मतलब कि ऐसे ही टोल्ड कि मेरा एक पूरा ग्रुप है जिसमें बेसिकली सारे मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आई नेवर फील कि ओ आई एम द ओल्डेस्ट, क्योंकि आई नेवर मतलब कि शोड, मतलब कि आई नेवर फेल्ट दैट, एंड आई मतलब कि इवन दो आई एम ओल्ड, लेकिन इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट समथिंग ऑकवर्ड फॉर मी, इट्स नॉट समथिंग दैट मेक्स मी इनसिक्योर कि वो पूरे ग्रुप में सबसे बड़ी मैं हूँ, मतलब इट नेवर मेक्स मी इनसिक्योर। सो यू शुड, और ऑल्सो आई एम अ चाइल्ड बाय हार्ट आई थिंक, तो इट्स इस वजह से इट्स सो मच फन। लेकिन अगेन मतलब कि इफ़ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मच मोर यंगर देन यू, you do not need to lie about your age, or you do not need to show them that you're insecure of your age, ताकि उनको भी मौका मिल जाए ये सोचने का कि ओ दे आर इनसिक्योर ऑफ योर एज, क्योंकि कोई ऐसा सोचेगा नहीं अगर आप ऐसा कोई इशारा नहीं दोगे कि ओ आई एम इनसिक्योर अबाउट माई एज। अगर आप नहीं दोगे तो कोई इस चीज़ के बारे में इस तरह कुछ सोचेगा भी नहीं, ओके, राइट, गॉट इट। Now what works for me, really works for me, is that कि जब भी I miss the time, or I am like oh I wish I was a teenage again, or I regret कि oh I did not live my teenage to the fullest or something like that, I remind myself कि Rabia, you are everything that you wanted to be as a child, or you are everything today that you wanted to be 10 years ago, even 5 years ago, even 2 years ago, ठीक है ना। You are that right now. Remember the time you were dying to be financially independent, ठीक है, you are that right now. Remember the time you wanted to have a podcast, or you wanted to have a public platform where you could communicate with people and have fun or make content, ठीक है ना। you're doing all of that right now. So I do not get के why I would be feeling कि I am ahead, I am behind, not ahead, I am behind my age, when I am mostly doing everything I dreamed of 10 years ago, या 5 years ago, या फिर 2 years ago. तो दिस सर्व्स एज अ मोटिवेशन टू मी। और मैंने
मतलब कि you get those Facebook memories, right? तो उस पे I shared this post like 8 years ago कि do not worry, you will find a degree you are interested in, you will graduate, you will find a job, you will do this, you will do that, you will do everything that you want to. And I looked at that post that I shared and I मतलब कि realized कि I have done all of this, ठीक है? तो मुझे लगता है कि everything would happen for you when द मतलब कि एट द टाइम इट इज meant to happen for you, ठीक है? और मुझे लगता है कि obviously with degree with job obviously it's meant to be after your graduation or it's meant to be the time it's meant to be, right? लेकिन with things like creative things या फिर content creation, you need to put a little bit effort and you need to push yourself to make it, वरना कोई भी आके आपका हाथ पकड़ के वो सारी चीज़ें नहीं करेगा। लेकिन the thing is that we should not get too obsessed with numbers कि how it's doing, how many people are engaging with it. We should be happy कि we are doing the things that we loved and we always wanted to do, ठीक है? And we shouldn't have um unrealistic dreams like, oh, I want to be famous, I want every single person to know me. I think ऐसे मतलब कि our dreams should more be more realistic, क्योंकि ऐसे ड्रीम्स अगर हम रखेंगे या फिर ऐसी चीज़ों से हम अगर अपनी सक्सेस डिफाइन करेंगे तो फिर आगे जाके जब वो चीज़ें नहीं होंगी या उनको होने में टाइम लगेगा तो हम जो है या फिर हम कहेंगे कि ओ मुझे इतने डिजिट कमाने हैं जब मैं इस उम्र की हूँ। इफ़ वील बी ऑब्सेस्ड विद नंबर्स, एनी सॉर्ट ऑफ नंबर, बी इट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, बी इट यूट्यूब व्यूज, बी इट योर सैलरी, बी इट योर इनकम, जितना हम नंबर से ऑब्सेस्ड होंगे उतना ज़्यादा आगे जाके जब उस चीज़ को टाइम लगेगा होने में तो हम जो है वो कर मतलब कि उतना हम ज़्यादा मिजरेबल होंगे, उतना ज़्यादा हम लोग परेशान होंगे, ठीक है? तो वी शुड हैव ड्रीम्स और वी शुड ड्रीम्स बट वी शुड नॉट हैव a very strict number that we have to achieve, क्योंकि things take time। और मे बी आप एक चीज़ के बारे में ड्रीम कर रहे हो लेकिन you should enjoy the process of it and how the way you are getting to do it, not how the outcome you're getting out of it. Obviously the outcome you're getting out of it is also important and it also drives you, लेकिन you should be grateful कि I am getting to do that, ठीक है ना? तो या नाउ आई रिमेंबर कि मेरी एक दोस्त जो है वो वेरी रिसेंटली शी वाज टर्निंग 20 years old, ठीक है? और दिस अदर फ्रेंड ऑफ माइन और मैं भी मतलब क्या वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड आई वाज सेइंग कि ओह आई विश आई वाज अ टीनेज टू, आई मिस टीनेज, और आई विश आई कुड बी अ टीनेजर अगेन, और ये वो फला फला। एंड दिस अदर फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि बट 20s आर सो मच बेटर देन टीनेज। और I when I think about it, she's so right. मैं मेरे my teenage was very bad. There was academic pressure. There was weird teachers जिनकी वजह से मेरा सांस बंद हुआ था. They were that were threatening me for my life. I was studying things that I did not wanted to. तो मुझे नहीं समझ आती कि in what earth I am saying कि oh I wish my teenage when my 20s are so much better, or we do not get it, लेकिन you should know कि with getting older you are getting so much more independence of doing the things you always wanted to do. Right now I'm doing the things that I could not have done when I was 15 years old or I was 16 years old. So how could I sit here and imagine कि काश मैं 15 years की होती when I was living a miserable, when I was not having that much fun when I was 15 years old. तो एक तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट के अब मैं जब याद करती हूँ कि ओ आई विश आई वॉज इन यूनिवर्सिटी अगेन और आई विश आई वॉज अ स्टूडेंट अगेन, तो मैं कहती हूँ रवि डू यू वॉन्ट टू गो बैक टू योर ब्रोक एरा व्हेन एक तो तुम पे एकेडमिक प्रेशर बहुत था, सेकेंडली यू वर ब्रोक, ठीक है ना? तो मतलब कि यू वर नॉट हैविंग दैट, मतलब कि डू यू रियली वांट टू गो बैक टू द टाइम यू डिड नॉट हैव अ जॉब एंड यू वर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ठीक है? तो फिर आई रियलाइज कि नो, आई एम enjoying दिस फेज ऑफ माई लाइफ और आई एम लिविंग फुल्ली इट, I am fully living it and I am excited for the next phase of my life. So first of all you need to be present in the moment। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बहुत मिजरेबल लाइफ है। आई थिंक यू शुड enjoy every phase you're in।
माई सिस्टर इज गोइंग इन यूनिवर्सिटी और अभी वो कॉलेज में है और वो बस कहती है कि बस ये कॉलेज खत्म हो. मैंने कहा वन डे यू विल बी इन यूनिवर्सिटी एंड यू विल मिस योर कॉलेज, क्योंकि आई डू मिस माई कॉलेज, आई मिस माई यूनिवर्सिटी. लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक माई पोस्ट ग्रेजुएशन era better for myself, or मतलब कि or my um what should I say, मतलब कि my this whatever this era is called, or my quarter life crisis. But I'm trying to deal with my quarter life crisis, and I think the best way for it is that to make things better for you. So I constantly remind myself the things that are were not good when I was younger, and now they're better for me, and now I'm enjoying it. This is my way of coping with things, and I think that it should be for you too. वक्त के साथ साथ जो है आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, वक्त के साथ साथ आप एक बेहतर इंसान ही बनते हो, आप इवॉल्व होते हो. तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको अपने आप को बताना चाहिए कि मैं इस वक्त एक बेहतर इंसान हूँ. और मेरे पास इस वक्त आई थिंक गेटिंग ओल्डर इज सो मच ब्यूटिफुल, क्योंकि यू आर गेटिंग सो मच विजडम with time, and you should accept the fact कि I have so much more independence, I have so much more wisdom जो कि मेरे पास पहले नहीं थी. ठीक है ना. I have a better control on my life, I have a better control on my emotions, I am navigating better in my life now, I have better knowledge about things, I have better um, आई एम स्मार्ट, आई एम मोर स्मार्ट. तो आपको आपके साथ साथ जो है अपनी खुद अपनी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, अब खुद अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि आप जब उस मतलब कि आप जब उस नेक्स्ट फेज में हो, तो इवन तो इट्स आई थिंक इट्स हेल्दी कि आप अपने पिछले फेज को याद करो और उसको इंजॉय करो याद करके. बट यू शुडेंट रिग्रेट कि यार मैं अब क्यों हूँ, मुझे इस टाइम पे वापस जाना है. यू शुडेंट बी सैड कि यार मेरा ज़िंदगी का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है. मैंने अपने आप को इतना मोटिवेट किया हुआ है कि इवन आई हैव प्लान थिंग्स फॉर माई सेल्फ व्हेन आई एम 60, सो दैट आई डू नॉट मतलब कि आई डू नॉट फील कि ओ being old is so sad, you are lonely all the time, you're मतलब कि even though I don't know how things gonna be when I'm that age, लेकिन at least I can make that age better for myself. Another thing that I really do is that के I constantly watch people, I constantly choose to get influenced by people who are much more older than me, especially the people I watch on YouTube, especially the fictional characters I choose to watch people और कैरेक्टर्स देर आर मतलब के मच मोर ओल्डर देन मी, ताकि मैं उस एज को जब जाऊँ मतलब कि ताकि इट कुड मेक मी एक्साइटेड टू टर्न दैट एज. स्पेशली विद इन्फ्लुएंसर्स, मैं अपने से बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ हु इज़ थ्राइविंग इन देयर थर्टीज़, तो दैट वुड मेक मी एक्साइटेड टू टर्न थर्टीज. ठीक है ना. और दैट वर्क्स फॉर मी, और इसी वजह से राइट नाउ आई एम सो कंफर्टेबल एंड सो आई एम enjoying the age I am, even though I know it's a very young age or it's maybe the best age you could ask for. लेकिन आप जब उस एज में होते हो तो आपको लगता है कि ओ आई विश आई वॉज 18-19 अगेन. तो इस वजह से मुझे लगता है कि नाउ आई एम मतलब I am not thinking about the time when I was 18-19. I am not thinking about the time when I was 22. I am 23 right now. और इससे मुझे याद आया कि मुझे अपनी पॉडकास्ट के बायो में अपनी एज चेंज करनी है और मैं वो आज कर दूंगी. लेकिन खैर, आई एम 23 right now, and I am only thinking about what I want to do in 23, what are the things I want, new things I want to develop, what are the books I want to read, what I want to get more wiser, I want to know more about things, everything. ठीक है ना. I want to do this or that. ठीक है. तो इस वजह से आई एम फोकसिंग ऑन द एज आई एम राइट नाउ, एंड आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट के यार काश मैं इस एज की होती है. एंड आई एम ट्राइंग टू मेक द एज दैट आर कमिंग फॉर मी एक्साइटेड. मतलब कि आई एम this does not make any sense, लेकिन I'm trying to make myself excited for the time that is coming. ठीक है. This is how I try to navigate with things कि मैं, और मैंने ये बात हमेशा बोली है, find excitement in little things, find excitement in this and that and that. You have to make this whole thing better for yourself. No one will come and do that for you. It's as simple as that. Acha, one more thing that I notice, or I think I notice in myself too, कि when we see people much more younger than us, so there is this instant thought in our head
कि oh I wish I was that age, or wow they're so lucky they're getting to live that age, which is I think is so weird क्योंकि we get to spend that time too. ऐसा नहीं है कि we were born at the age of 25. We were not born at the age of 30. We got to be 18 or 15 or 16 or 21 or 22 or 25 or whatever age we are fascinating कि I wish I was that age. We get to spend that age, ठीक है ना? तो इस वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस जिस एज में हो आप उस एज में प्रेजेंट रहो, और आप किसी और एज का सोच के ये मत सोचो कि काश मैं इस एज की होती, क्योंकि आप जिस एज में अभी हो अगर आप उसमें प्रेजेंट हो ना, तो फिर आप आगे जाके जब 60 ईयर्स के हो गए ना, तो फिर आप कहोगे कि ओ आई लिव दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ टू एंड आई डिड नॉट लुक बैक एंड रिग्रेटेड कि मैं इस एज की नहीं थी. एंड ऑन द अदर नोट यू आर गेटिंग टू स्पेंड ऑल दैट टाइम. यू बस ये है कि कोई इंसान आपसे पहले पैदा हो गया, कोई इंसान आपके बाद पैदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप सबको इक्वली एक जैसा अब टाइम मतलब कि मिल रही है. यू आर नॉट रॉब्ड. अगर आप 60 ईयर्स के हो और आप किसी को देख रहे हो, और 30 ईयर्स के हो या फिर 25 ईयर्स के हो और आप किसी को देख रहे हो हु इज मच मोर यंगर देन यूर विशिंग के काश में भी इस एज की होती. यू वर एट दैट एज दैट टाइम, और जिस इंसान को आप देख रहे हो दैट पर्सन विल टर्न टू 30 or 60 or 25 or whatever age you are in too. तो इट्स नॉट लाइक कि यू आर रॉब्ड ऑफ दैट एज, या फिर इस वजह से मुझे लगता है इट्स इम्पॉर्टेंट कि you have to live your life for the fullest. And another thing, again, you can do all the things you wanted to do at 18 at the age of 25. You literally can do every single thing that you wanted to do at 18. मुझे अपने आप में कोई खास फर्क नहीं पता लगता जब मैं 18 थी और अब मेरी जो एज है, इवन दो देयर इज अ 5 year गैप, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ें उस वक्त इंजॉय करती थी मैं इस वक्त भी करती हूँ. तो इट्स नॉट लाइक कि माई एज इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टिंग मी टू डू एनी थिंग एट ऑल. अनदर थिंग, और आई शेयर दैट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी एज वेल, कि आई हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग अप. और इसका मतलब ये, नो, आई हैव स्टॉप्ड गेटिंग ओल्डर, या आई हैव स्टॉप्ड रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ कि मुझे सर्टन वे एक्ट करना है क्योंकि मैं इस एज की हूँ, मुझे मिच्योर होना है ताकि मैं इस एज की हूँ. सबसे पहले तो मेच्योरिटी डज नॉट कम विद एज. मेच्योरिटी कम्स विद सर्कमस्टांसेस. मेच्योरिटी हालात से आती है. चेंज आप में जो है वो हालात से आता है, जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें होती है उससे आता है. अगर आप एक ही जगह रहोगे और आप एक ही कमरे में बंद हो और आपको किसी चीज़ के लिए एक्सेस नहीं है, तो हाउ कैन यू चेंज? आप चेंज होते हो जब आप कुछ नया पढ़ते हो, आप चेंज होते हो जब आपकी किसी नए इंसान से दोस्ती होती है, तो आप इन चीज़ों की वजह से चेंज होते हो, आप उम्र भरने की वजह से चेंज नहीं होते. तो चेंज और मेच्योरिटी और वट एवर मतलब कि पर्सनैलिटी चेंजेस यू गो थ्रू और ग्रूमिंग डज नॉट कम विद एज, इट कम्स विद द सर्कमस्टांसेस और द थिंग्स और द पीपल अराउंड यू, राइट? इस वजह से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस एज की हूँ तो देयर इज दिस सर्टेन पर्सनैलिटी आई हैव टू ओप्ट ताकि मैं इस एज की लगूँ. दिस इज़ वॉट आई हैव स्टॉप डूइंग. ऑब्वियसली आई एम एजिंग, आई मेरी हर साल उम्र बढ़ रही है, लेकिन आई एम स्टिल डूइंग वट आई वॉन्ट टू डू. अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं ये देखूँ तो मैं ये देखूँगी. आई डू नॉट केयर कि वो किस उम्र के बच्चों के लिए कंटेंट बने. अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं जॉयलैंड जाऊँ या मैं विंटरलैंड जाऊँ या मैं कहीं भी जाऊँ, आई विल गो, ठीक है. तो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू क्योंकि मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंसर, आई कैन नॉट रिमेंबर, बट दे बेसिकली सेड कि आई हैव स्टॉप्ड गेटिंग ओल्डर. येस आई एम एजिंग, मेरी हर साल उम्र बढ़ रही है, लेकिन मेरी जो चीज़ें मेरा करने का दिल चाह रहा है आई विल डू इट. आई वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ विद माई एज क्योंकि दैट थिंग इज़ नॉट, मतलब इट डज नॉट मेक सेंस. तो स्टॉप गेटिंग ओल्डर, बी यंग. हम इतने ज़्यादा लोगों को देखते हैं दे आर 60, 70 और मतलब कि वी सी देम फुल ऑफ लाइफ एंड वी विश कि काश हम भी उस उस एज में जाएं तो हम ऐसे हों. क्योंकि आप देख, और आप उन लोगों में ये बात नोटिस करोगे कि दे आर नॉट मिजरेबल फॉर द फैक्ट कि दे आर 70 or 60 years ओल्ड, ठीक है ना. दे नॉट पिटी देम सेल्फ कि हम इस एज के क्यों हैं या क्यों हैं. दे आर लिविंग, ठीक है ना, और दे आर इंजॉइंग द थिंग्स दे वॉन्ट टू.
और इस वजह से वी आर ऑल्सो एडमायरिंग देम एंड वी आर ऑल्सो इंजॉइंग देम। तो अगर आप खुद अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट होगे तो अगला इंसान ऐसा कुछ सोचेगा भी नहीं कि ओ दे आर ओल्ड और ओ वाओ इसको तंग करेंगे, दे आर ओल्ड दे आर ओल्ड। जब आप खुद उस चीज़ के बारे में इनसिक्योर होगे तो अगला भी होगा। सो यू शुड स्टॉप मतलब कि एसोसिएटिंग द थिंग्स यू शुड डू विद योर एज और द थिंग्स यू शुड वेयर विद योर एज। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू और एट एनी एज और एट एनी टाइम, ठीक है। एंड यू शुड नॉट गिव अप ऑन द थिंग्स यू लाइक जस्ट बिकॉज यू थिंक के ओ मैं अब इस एज की हूँ तो आई शुड गिव अप ऑन दैट। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी एक चीज़ पसंद होती है तो आपको पूरी ज़िंदगी पसंद होती है। यू ग्रो आउट ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी नेचुरल एंड लेट योर सेल्फ नेचुरली ग्रो आउट ऑफ थिंग्स। मैं और आई मतलब क्या आई शेयर दैट इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन ब्लूज वाली एपिसोड में भी कि आई लेट माई सेल्फ ग्रो आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और आई ग्रू आउट ऑफ इट। और अब मेरा नहीं दिल चाहता रोज़ वहाँ जाने का और आई डू नॉट मिस दैट टाइम क्योंकि अब आई एम हैप्पी विद द वे आई एम। तो योर हार्ट विल ग्रो आउट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। जैसे विद माई ब्रदर इट हैपेंड इन मतलब के हिज मतलब के joy he should get from joyland, he grew out of it, ठीक है ना। it happened for him or it does not please him anymore so it's not doing it। मुझे I did not grow out of it, if I would be तो I would be, लेकिन I don't think I will वैसे। तो मुझे लगता है कि ओवर टाइम देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड एंजॉय राइट नाउ और कुछ अर्से बाद आप नहीं करोगे। अगेन इट वुड नॉट कम बिकॉज ऑफ एज, इट वुड कम बिकॉज as you please or as you like or with the circumstance। So let the things grew out of you naturally and it shouldn't be कि I have to मतलब कि get rid of that habit of mine or मतलब कि anything that is मतलब harmless or is something that is giving you pleasure, ठीक है। तो you grew out of things and you do। अब बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक नहीं बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल ये है कि आई अडेप्टेड दिस हैबिट ऑफ ब्रशिंग माई टीथ एवरी सिंगल नाइट। और अब जो है I enjoy eating fruits now जो और I enjoy massaging my hairs with oil now। सारी बेसिकली जो चीज़ें मुझे एज अ चाइल्ड बहुत बुरी लगती थी आई एम डूइंग इट नाउ, ठीक है ना। और क्योंकि आई हैव रियलाइज कि हाउ मच इट्स इंपॉर्टेंट फॉर माई बॉडी, ठीक है। तो आई एम डूइंग एवरी सिंगल थिंग दैट एज अ चाइल्ड आई वुड नॉट हैव इमेजिन्ड माई सेल्फ डूइंग, ठीक है। आई वुड कट ऑफ थिंग्स दैट हैव अ लॉट ऑफ शुगर क्योंकि आई नो कि ओ इट्स नॉट गुड फॉर मी। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगेगा कि ओ इट वुड कॉज ब्रेकआउट ऑन माई स्किन और ये कर देगा वो कर देगा तो आई एम अवॉइडिंग दैट। मी एज अ चाइल्ड वुड हैव नेवर इमेजिन दैट, लेकिन आई एम डूइंग इट नाउ क्योंकि आई वॉन्ट टू डू इट नाउ, ठीक है। और आई हैव रियलाइज कि विद टाइम आई रियलाइज के इट्स गुड फॉर मी और ये हो रहा है वो हो रहा है। अब बड़ी कॉमन एग्जाम्पल ये है कि ना आई डोंट नो माई ब्रदर ब्रॉड दिस थिंग और मैं बहुत मतलब कि वॉज लेट एट नाइट, इट वॉज 12 और 1 AM एंड आई टोल्ड हिम के ओ मैंने पेस्ट कर लिया, मैंने ब्रश कर लिए अपने दांत तो मैंने नहीं अब ये चीज़ खानी ना। तो कहता बड़ी बुजुर्गों वाली तुमने बात की है कि तुमने अपने दांत ब्रश कर लिए। एंड दैट वाज सो फनी फॉर मी, लेकिन आई एंजॉयड दैट क्योंकि मतलब कि आई लाइक दिस हैबिट दैट आई अडेप्टेड। और मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी लाइक रबिया यू वर नॉट ब्रशिंग योर टीथ एट नाइट। या फॉर द मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई वाज नॉट। मैं सुबह करती थी एंड आई शेयर दैट ऑन इंस्टाग्राम टू। मैं सुबह करती थी क्योंकि सुबह आपके मुंह में जो है वो मतलब कि देयर इज अ स्मेल एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर स्मेल सो यू हैव टू ब्रश योर टीथ। लेकिन मैं रात को हमेशा भूल जाती थी अंटिल आई रियलाइज कि रबिया यू शुड। और अब आई कैन नॉट लिव विदाउट ब्रशिंग माई टीथ एट नाइट, ठीक है। तो इस वजह से I adapted this habit very later on in my life और now I do it। और मुझे मेरा भाई कह रहा था कि कितनी तुम बुजुर्गों वाली बात तुमने की है। Then there was a time when I was sleeping very early at night, ठीक है। अब क्यों obviously things have changed और I have explained it enough कि मैं क्यों जल्दी नहीं सो सकती। I'm still a morning person though। खैर, तो मुझे सारे कहते थे बड़ी तुम्हारी बुजुर्गों वाली हालत आदत है कि तुम जल्दी सो जाती हो। तो मुझे लगती वही बात है ना कि हमने चीज़ें को ना एज से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन आई लाइक डूइंग इट। तो इट वॉज नॉट लाइक कि ओ मैं कोई चीज़ इसलिए करूँगी क्योंकि ये मेरे एज अप्रोप्रिएट है और ये मेरे एज अप्रोप्रिएट नहीं है तो मैं इसलिए नहीं करूँगी। तो अगेन यू विल नेचुरली डेवलप थिंग्स दैट यू वांट, यू विल नेचुरली ग्रो आउट ऑफ द थिंग्स दैट यू डोंट वांट एनी मोर। तो इस वजह से डू नॉट लेट योर एज ड्राइव यू। जो आपका दिल चाहता है वैसे करो। डू नॉट try to act like your age, do not try to get older because we are growing up but we are not growing older or we are growing older but living younger।
this is the motto I'm living in. I am growing older but I am living younger. मुझे लगता है I'm much more happier than I was last year, or last year I was much more happier than I was last year, or every single year I try to make the best out of it. Every single year I tell myself that this is the best year ever. Mashallah, alhamdulillah. Every single year I try to मतलब कि excite myself for the upcoming time. और इस वजह से मुझे लगता है कि I do not know how many people were there, how many people that are listening to me right now were, मतलब mostly nahi sari, it was girls. Like, and I basically on Eid I had this like um DJ night party on my Instagram stories, and literally there was no one. और मेरे बहन भाई इतने आवाजार हुए थे, वो सो रहे थे, उनका इतना मूड ऑफ था, पता नहीं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ईद से, आई डोंट नो. लेकिन आई वाज लिटरली लाइक स्क्रीमिंग सॉन्ग्स एंड आई अपलोडेड दो स्टोरीज इन माई क्लोज फ्रेंड्स. तो और सिर्फ लड़कियों ने वो देखी है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे मतलब लड़कों को दिखानी चाहिए. तो बेसिकली मैंने वो किया और आई हैड सो मच फन, और आई वाज टेलिंग पीपल कि यू लिटरली कैन एंजॉय योर सेल्फ सो मच, यू जस्ट डू नॉट नो कि व्हाट यू वांट. ठीक है ना. इस वजह से try to make things exciting for yourself. No one would come out and make it for you. Age gracefully, accept your age, be a jolly person, be the person कि आपसे जो younger लोग हैं they could aspire to be you, कि यार जब मैं इस age की होंगी तो I want to be that, I want to be like her, I want to do that. be be it in your 40s or 30s or 20s or 50s. ठीक है ना. Don't be miserable about the fact, don't lie your age, don't be miserable about getting older. Do not look for past ke, oh I wish I was this age again. Live the age you are in. You can still do whatever you want to do at the age of 18. You're मतलब it's just a वाकई age is just a number. मुझे लिटरली अपने में कोई चेंज फील नहीं होता जब मैं 18 की थी और जब मैं 25 की नहीं हूँ, 23 की हूँ. मुझे कोई अपने आप में ऐसा कोई चेंज फील नहीं होता, और मैं अभी भी वो करती हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा चीज़ें करती हूँ, और जब मैं उस टाइम सोचती थी कि यार मुझे ये करना है, मैं अब वो चीज़ें कर रही हूँ. तो या तो इस वजह से घबरा मत के, आई एम बेसिकली टर्निंग 30 इन द नेक्स्ट 7 years, और इट्स नॉट दैट फार अवे. लेकिन मैं अभी से आई ट्राई टू एक्साइट माई सेल्फ फॉर टर्निंग 30, क्योंकि 30 इज़ अ बिग एज और एवरी वन इज स्केयर टू टर्न 30. I was scared too, लेकिन now I have accepted कि I will turn 30 and I should excite myself for turning 30. और मैं नहीं चाहती जब मैं 30 years की हूँ तो मैं सोचूं कि यार I wish I would live my 20s better. तो इस वजह से जो भी मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो मुझे खुशी दे सकती है, और जैसे भी मैं अपने आप को खुश रख सकती हूँ मैं उस तरह अपने आप को खुश रख रही हूँ. और हाँ बेसिकली ये. सो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ अभी से, आज से, अभी से. आई होप दिस पॉडकास्ट डिड समथिंग फॉर यू. आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, एंड इवन दो इफ यू डिडंट लर्न एनीथिंग, आई होप इट at least gave you a positive feeling or something positive about yourself. ठीक है ना. I hope you feel good after listening to it. This is what I mean. So thank you for tuning in. I actually posted the story ke like this story and I'll give you a shout out in the podcast. So, and I'm so happy because every single person that liked the story, that every single person that liked the story is a great friend of mine or really like closer to me. ठीक है. So I am so happy to give a shout out to every single person in this list. सबसे पहले we have Aisha. We still haven't met, or but you are the sweetest person ever. Then we have Sumaya Batul. Sumaya, there's so मतलब कि पिछले 2 मीटअप हुए हैं और मैं सुमैया से मिल नहीं पाई. और but Sumaya is very talented. I do not know if you guys know or if you guys saw, but I basically got a tote bag on my birthday, और this is a good reminder कि मुझे उसकी स्टोरी लगानी है. तो समैया इज़ वेरी टैलेंटेड. समैया डिज़ाइंड आ पोस्ट फॉर मी वंस, और वो सबसे बेस्ट पोस्ट है मेरी पूरी फीड पे. और आई एम प्लानिंग कि मेरा जब भी नेक्स्ट सीज़न आएगा और मैं नेक्स्ट कवर डिज़ाइन करूँगी तो आई वॉन्ट इट टू बी मेड फ्रॉम सुमैया. लेकिन सुमैया इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, और मुझे टोट बैग मिला है उस पर सुमैया, इट वॉज एक्चुअली कस्टम मेड बाय सुमैया. और द फ्रेंड हु गेव मी न्यू के आई लव BTS अलॉट, तो उस पर सारे BTS के मेम्बर्स के नाम मेंशन है. इट वॉज मेड बाय सुमैया, सो शी डिड अ ग्रेट जॉब विद इट.
Next up, we have Mahnoor, and I do not know I have enough words to express how much I love Mahnoor. She is one of the most special person, or she is the person who would make you feel good about yourself, ठीक है ना? और I think कि being with Mahnoor और मरियम like this story, और मरियम का मैंने, लेकिन मरियम का नाम बहुत नीचे था, लेकिन I'm mentioning her here. Shout out to Mariam. She is also very special to me. Or they're the people who would make you feel good about yourself, and I think that they really make me energetic and positive. And even though I meet them like once a month, barely once a month, maybe once in 2 months, yeah, once in 3 months, लेकिन they are filled with so much positivity, or they are so मतलब appreciative about other people. So they're the people who make you feel so good, and I feel so good around them. Okay. Next we have Sama को पता है कि Sama is literally मतलब सम अगर brown girl rants is could मतलब if I could say कि brown girl rants is running by two people, the other person would be Sama. I literally go to her for every single advice ever, and हालांकि she is so much younger from me. She's मतलब मुझे नहीं पता, she is maybe 5 years younger from me, लेकिन she literally tells me every single thing, or we share so much, or we have so much in common. I wish that she lives in Karachi, so I wish that she was living in Lahore. We would have been best friends. Next, Fuzan, what's up? How are you? I hope your life is going well after graduation. नेक्स्ट रिमशा कम सून. रिमशा की भी अभी रिमशा की ग्रेजुएशन अभी होनी है एक्चुअली, लेकिन रिमशा हैव प्रॉमिस्ड भी कि वो जब ग्रेजुएशन के बाद आएगी तो वील शील कम, ठीक है ना? तो रिमशा इज माई बेस्ट फ्रेंड कजन, माई कजन बेस्ट फ्रेंड, और शी लिव्स इन अनदर सिटी, लेकिन वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स. तो आई एम वेटिंग फॉर हर, आई एम डेस्परेटली वेटिंग. वी हैव सो मच प्लान, तो आई एम वेटिंग फॉर हर टू कम ओवर. तो it will be so much fun. तो मतलब कि I'll like मतलब कि I'm so excited क्योंकि I'll properly show you guys, क्योंकि I think I mentioned her a lot. मुझे लगता है मैं नाम से नहीं करती, लेकिन whenever I talk about my friends, तो I do mention her a lot, even though she's my cousin. So I am really excited for her to come over and we can have a time of our life. ठीक है, क्योंकि she just got graduate too. Next up we have Yashika. Yashika, how are you? Yashika is one of the most, मतलब कि शुरू के टाइम पे Yashika is the one who gave me the most motivation with the podcast, जबकि मेरी episode बहुत crappy होती थी. और Yashika, I am currently watching an Indian series called Jubilee, and Yashika recommended me that series. So shout out to Yashika. Next we have Mariam. Mariam, I already talked about Mariam, लेकिन Mariam is one of the most sweetest person ever, and I am so grateful to have her as a friend. और ये मतलब कि actually these are the friendship that were really with Mahnoor and Mariam. These were the friendships that are really unexpected for me, क्योंकि even though we were from the same university, लेकिन मेरी इनसे यूनिवर्सिटी के मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद हुई है, and I could not मतलब मुझे I could not even realize that time a year back कि oh, I am gonna develop such a amazing bond with all these people. मतलब I did not knew, लेकिन I am so grateful for them. Next we have Hulia Sheikh, or Hulia Sheikh. I am reading Shatter Me. Who मतलब कि मैं when I was screaming Shatter Me series, मैं अपनी Instagram stories पे रोज Shatter Me series पढ़ी हूँ, तो I am screaming about it every single day. और she's someone who understands me, and we both have the same perspective on things. So I am so excited to share more with her. नेक्स्ट वी हैव सुगरा और सना, और मुझे नहीं समझ आती कि मैं आपको कौन से नाम से बुलाऊं, लेकिन सुगरा इज़ माई नेबर, और शी स्वीटेस्ट गर्ल लेवल. और सूरा को मैंने आज वो रिकमेंड किया है कि शैटर मी सीरीज पढ़े, लेट्स सी वो पढ़ती है कि नहीं. देन वी हैव अतिया. अतिया इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, और अतिया आई मिस यू सो मच, प्लीज़ मीट मी. और मुझे मुझे अच्छा, तो आई हैव, मुझे लगता है कि पूरी अब मैं 1 घंटा जो है ना अपने दोस्तों के बारे में बोलती रहूँगी, लेकिन अच्छा, तो मुझे लगता है कि आई हैव रिकनेक्टेड विद माई स्कूल फ्रेंड्स, और टू दैट लेवल कि आई कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल डे विदाउट टॉकिंग टू देम, एंड आई एम रियली सीरियस राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी सबसे अच्छी फेवर ज़िंदगी में ये हो गई है कि आई कैन फाइनली डिफाइन कि आई हैव 3 ग्रुप्स, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आई फाइनली लो कि मेरे कितने ग्रुप हैं, फ्रेंड सर्कल हैं.
Or with my school friend circle, obviously we grew apart. I don't know how to explain it. लेकिन बेसिकली हम लोग अलग अलग हो गए, या हमारी इतनी ज़्यादा हम इन कांटेक्ट नहीं रहे स्कूल के बाद, इवन दो ऑब्वियसली वी वर कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, और वी वुड मीट वंस अ ईयर, क्योंकि ऑब्वियसली वी वर ऑल बिजी. लेकिन जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, स्पेशली कोविड के बाद से बेसिकली हम आहिस्ता 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 फिर से रिकनेक्ट हो गए, टू द पॉइंट नाउ के आई कैन नॉट live a single day without talking to them, and I enjoy talking to them so much. मैं literally हंस रही होती हूँ पागलों की तरह, और they're the person I would text every single detail of my life, और so I enjoy them so much. और actually मैं अपनी जो podcast की मेरी co-host है वो मेरी school friend ही है, मेरी school best friend ही है, तो I am really excited for that. Next up, we have another Mariam. Like, this is the Mariam I met online. Again, Mariam is the listener who would like tell me and give me a full feedback of the podcast. And she's someone, क्योंकि मैं हर वक्त बोलती भी रहती हूँ podcast में कि please connect to me, please talk to me if you want to, या if you want any advice. Or she's someone who literally reached out to me and talked to me about things, or we had such a lovely conversation. और इस वजह से I really enjoy when I connect with someone through this podcast, even though me and Mariam are mutuals on Twitter since so long. लेकिन मुझे लगता है कि इस podcast की वजह से we really like got closer. और yeah, और Mariam is an amazing writer, by the way, and an amazing editor, and she's very talented, and I love her for that. Next we have Rabia. Rabia is my literally राबिया. एक तो राबिया और मेरा नाम बहुत सिमिलर है, बस मेरे नाम में वाई आता है और मेरा नाम डिफरेंट प्रोनाउंस होता है, बट बेसिकली इट्स द सेम नेम. मुझे बहुत लोग राबिया कह भी देते हैं, प्रोनाउंस कर भी देते हैं. राबिया एंड मी, मतलब कि इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमसैट्स और इफ़ यू नो मी फ्रॉम कॉमसैट्स, तो यू वुड नो कि वी आर द पेयर, द डुओ, द या मुझे और कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा. सो मी एंड राबिया आर द को होस्ट फॉर एवर, और वी हैव होस्टेड 3 इवेंट्स, और तीनों कवाली नाइट थी बेसिकली, और तीनों बहुत अच्छे और बड़े इवेंट्स थे. तो आई जस्ट होप कि जब कोई भी कॉमसैट्स में कवाली नाइट हो तो हमें ज़रूर याद किया जाए, क्योंकि एक तो इट्स सो मच फन टू बी विद राबिया, क्योंकि आई थिंक वी बोथ आर लाइक सनशाइन गर्लीज इन आवर ओन वे. लेकिन शी इज़ सो फनी एंड शी इज़ सच अ फन टाइम टू बी विद, एंड आई कैन नॉट वेट टू मीट हर. और मुझे लगता है कि मी एंड राबिया वुड फॉर एवर बी आइकॉनिक, मतलब वी आर दी डुओ. तो राबिया, मीट मी सून. देन वी हैव हादिया सहर. हादिया सहर इज एन अदर लिसनर जिसने मुझे फर्स्ट एपिसोड से इतना अच्छा फीडबैक दिया है, और मतलब कि शी लिटरली टेल्स एवरी सिंगल थिंग टू मी कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, एंड आई लाइक व्हेन समवन टेल्स मी what they did not like in the episode, क्योंकि I could improve in that. ठीक है. Next, the last like is from Taylor Swift. It's from Taylor Swift 198955. Thank you, Taylor. I love Cardigan. So thank you so much for liking my story. या सो दैट्स इट फॉर द एपिसोड. और 1-1.5 घंटे की नहीं हुई, और आई विश के और स्टोरीज लाइक करते, क्यों आई रियली लव टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स. लेकिन और आई मेड श्योर कि मैं इस बार हर किसी, अब मैं ये स्टोरी फ़ौरन डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं 1-2 लोगों के नाम नहीं ले सकी थी, उन्होंने कहा हमने पूरी एपिसोड सुनी और नाम नहीं लिया. मैंने कहा मैं तब तक रिकॉर्ड कर चुकी थी. लेकिन खैर, इस बार सबने लाइक किया और मैंने सबका नाम ले लिया, और नाउ आई एम डिलीटिंग द स्टोरी. But have a nice week. I would see you guys next Wednesday. Or yeah, stay happy, or let me know how you feel about this podcast. क्योंकि feedback is very important to me, और I am really positive about this podcast. I have to edit this podcast a lot, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग उस पर देख रही हूँ, और मुझे नज़र आ रहा है कि कितने ऊपर नीचे हैं सब, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, फ्रीक्वेंसी वो सब कुछ, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा. लेकिन आई होप कि अच्छी हालत में आप लोगों को मिल जाए. अब देखते हैं मैंने किया क्या है. आई होप द साउंड बेटर.